हेलो हाय नमस्कार मु लोकनाथ स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल आउ एक जबरदस्त वीडियो को आसंता आज जानिबा बाथरूम डोर किपरि एल्युमिनियम रे प्रस्तुत होउची चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया। मोर ए मशीन टा बहुत पुराना है तर यार एडजस्टमेंट नट बोल्ट से खोली की करिया पड़िबो कारण हमर द्वार बंधर फ्रेम टा नासा कोटा हो 45 एंगल रे प्रथम मशीन को सेट कर दबा 45 एंगल रे तापरे एबे देटा कटपिस नहीं कटिंग करके ट्रायल करबा 45 एंगल ठीक अछि ना नहीं। एबे नासा ठीक अछि तामने हमरो सेटअप ठीक है सरजी। एबे चलंदो काटिबा हमरो द्वार बंधर फ्रेम द्वार बंध ठीक है परी एबे चलंदो काटिबा द्वार बंधर मेजरमेंट जहाँ थी हाइट को पूरा सेम टू सेम मेजरमेंट कटा हो चौड़ाटा भी जहाँ भी थी पूरा सेम टू सेम मेजरमेंट कटा हो जेहेतु नासा होची वर्तमान कटिंग हमर सरी जाइए। एबे फिटिंग करबा तादरे एल क्लैंप नॉर्मली एल्युमिनियम रो भी एल क्लैंप आसी 1/1.5 रो ताको फिटिंग गल चलिबो किंतु आमे व्यवहार करूछु फाइबर बाथरूम डोर व्यवहार होथिबा कोनी को जोटा कि बहुत ड्यूरेबल आउ स्ट्रेंथ मध्ये अधिक लास्टिंग मध्ये बहुत भलो करिवो। एबे जोड़िबा फ्रेम मनो राती गला राती रे शूटिंग होची फ्रेम डी फिटिंग जो परे दूसरा मेजरमेंट जहाँ रहबो ताठू 1/4 इंचेस कम मेजरमेंट रे डोर बनबो हाइट रे 3 सूतारू हाफ इंच भाया कम करें चौड़े पाए कम करदे हो द्वार बंध रेडी। एबे नहीं जा भीतर मेजरमेंट यही गुड़िक हूँ काटी देती हाइट रे जति भी भीतर मेजरमेंट थिला 3 सूता कम करी काटी देती। एबे तापरे काटिबा एच काटिबा हेले भीतर द्वार बंध मेजरमेंट दिला ताटरू पाए कम हेकरी डोर बनिबो तो तमे डोर रो दी पटर ए रो मेजरमेंट 3 इंच कम हेकरी तापरे एच कटा हबो। एबे दे दबा चिन्ह एच टाइट करा पे एच दी प्रकार आसुची गोटे डबल एच आसुची दी पट को फेस थेबो तार आ गोटे सिंगल एच आसुची सिंगल एच लगेबार किसी भी असुविधा नहीं किंतु या एच लगे तार मझीर गैपटा टिके हल्का मझीर केतले दिन रही जाए ए एच टा लगे द्वारा आपन किसी प्रॉब्लम हबनी टार्बल किसी असुविधा नहीं आराम से लगे हबो तारे या द्वारा मझीर भी गैप किसी आसीबनी कि ऑप्शन रे रहबनी। आगुर भी आमे से सिंगल एच व्यवहार करथुलु एबे तो एच भी नुआ आसी कुछ दिन हम तो यहाँ व्यवहार करने बहुत सुविधा भी होची भाव में उभय पाखे होल करदे फिटिंग आरंभ हम डोर एपड़ होलटा को 10 mm भितर करेंगे स्क्रू मथाटा गल
एबे फिटिंग करवा डोर फिटिंग करवा बहुत सहज या स्क्रू आप व्यवहार करेंगे ब्लैक रो 1.5 इंच स्क्रू 38/6 एक्चुअल तो 38/6 आसेनी 4 पॉइंट समथिंग हेड आसे कि आम 38/6 कहले से स्क्रूटा ही मिले तो 1.5 इंच ब्लैक स्क्रू कहदेले भी आराम से मिल जाए नंबर किसी बहया दरकार 1.5 इंच मैंने 38 साइज में हो ब्लैक स्क्रू कहदेले स्क्रू ही मिल जाए एबे फिटिंग सरी जाइए एबे काटिबा एसीबी सीट भीतर भीतर मेजरमेंट जहाँ भी अच्छी आपन को या पूर्व वीडियो रे कहती कि एच को एच मेजरमेंट कला बेले हाफ इंच अधिक नेबे आउ एवं ए को ए भीतर भीतर मेजरमेंट कला बेले 5 सूता ओवर नेबे एबे से परी मेजरमेंट हिसाब रे हम को काटी दबा आज्ञा देखु ये हूँ रबर ये है केपीटीएम रबर जमा छिंडीबनी कि भिंडीबनी जमी कर सेमती हम दिया जदि आपण एपर्यंत मो वीडियो टी देखुं ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जदि आपण प्रथम थर मो चैनल रे ये टाइप वीडियो देखुं ताले सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे ये टाइप कंटेंट वीडियो देखिए तो आम यू रबर लगेगा जरी गुड़ाक मुझे चढ़ाई एसी सीट आउ काटिया पर ही छड़े देवाटा बेटर कारण ये फटा सरला किसी दिन रहीगला क्लाइमेट परिवर्तन में सुखीज एमती सहज छाड़बनी तो सबुठ बेटर आपण कटिंग कला पर ही छड़ेदेवे सब बेटर सबुठ विरक्त और कष्टकर कम सेटा ए चलते फ्रेम रे एसी सीट को बदला रबरटा तरह टे मोटा पड़ जाए एसी सीट भी जाऊनी पल्लारे टे प्रोब्लेम हो तथापि हो कि असुविधा ना बर्तमान ऊपर येटा को स्क्रू करदेवा डोर रेडी फिटिंग सरी जाइए चलतु दुआर बंधर फ्रेम होल कर प्रथम होल करदेवा कथा मुझे होल कर नी तो जो एमती होल कर एक्चुअली आप फ्रेम खुंजा पूर्व फ्रेम कांथर टाइट करने होल करदे आपण बेटर यहाँ टे असुविधा होगा
ମନେ ନଥିଲା ହୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ହୋଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆପଣ ଫ୍ରେମ୍ ଖୋଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଲ୍ କରିଦେବେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ୍ଟା ଫିଟିଂ କରିବା। मेजरमेंट सब ठीक ठाक अच्छी। तो ये ओलम करवा लेवल देखा मार्किंग हो गला। देखा ऊपर हाइट का एंगल ठीक अच्छे ना नहीं। हमारा मिस्त्री ड्रिल धरिक बहुत एपट सेपट होती केमती जल्दी होल सैले चिन्ह दिया सैले होल करिए बहुत व्यस्ततार अच्छे। द्वार बंधे आप 4टी लेखे होल करेंगे 3टी लेखे कले भी चलो जे कि 4टी लेखे करदे सब बेटर पेन स्ट्रंग रहा जो जगह पैकिंग लगे पैकिंग देवे कारण थर थर गोटे गोटे जगह कांथर बेंड भी थाए बहुत बेंड हिसाब से जब टाइट कर दिखते ताले कबाट लगला बहुत असुंदर लगे तो जो जमी बेंड थी आप से अनुसार पैकिंग देदेले बेटर आउ पैकिंग तो सिलिकन तो देवे सीटा आप जमी देवे ना तो भर घर भर गैप देखा जब गैप थी तो घर भर देखा बाहर स्क्रू दे टाइट करदे मिस्त्री आमर रेडी माने जोगाड़ दबारे सांगे सांगे जोगाड़ दबार रेडी होचंदी आमर बाकाड़ी 11 रो टीम रो कैप्टेन से टूर्नामेंट खेल जाती ये बाउल पलि आम सागे फ्रेम बर्तन टाइट होती फिटिंग कर कबाट प्रथम बाहर पटे टार बोल्ट लगे तार मेजरमेंट टे देदवा रेडी बाहर ही हम सब डोर हैंडल टार बोल्ट सब फिटिंग करदे कारण कबाट झुलेला लगे ये प्रोब्लेम हुए तो सब आग बाहर फिटिंग करदे सब बेटर अपना 4 इंचिया आलुमिनियम आइवरी कलर टार बोल्ट मिलूँ आप व्यवहार करेंगे बाहर पटे जेहेतु लगुच पैकिंग लगे दीटा एसयू सीट सेम मेजरमेंट काटिकी तले देकी पैकिंग देकी आप स्क्रू टाइट करदे आप कारण
କାରଣ ଦୁଆର ବନ୍ଧର ଝରିର जो मेजरमेंट थाए हाइटटा आपणकर दुईटा एसपी सीट ही लगे आप टार बोल्ट जगह भी डोर बोल्ट व्यवहार करेंगे छोट आइवरी कलर डोर बोल्ट जदि लॉक करा चाहते तो डोर बोल्ट व्यवहार करेंगे आउ हैंडल सब अमेरिकन हैंडल व्यवहार करेंगे आप डी हैंडलटा आप व्यवहार करने असुविधा हुए सब तो से सब आप अमेरिकन हैंडल व्यवहार करेंगे सब बेटर परफॉर्मेंस एपटे लगेदवा भूल कर छाड़ देली आम हेड मिस्त्री टाइट करेंगे स्क्रू बंधटे यहपरी भाव में फिटिंग तले हैंडल आउ टार बोल्ट भी कबाट लगी छे कभी जो आम आगुरी लगे देलु चलतु फिटिंग करवा डोर कबाटी को नहीं भितर को आसर भितर अंधार से प्लास्टरिंग सब कम हो सहित वीडियो रिकॉर्डिंग भी चली जस्ट को ऊपर 4 इंच 5 इंच आप छाड़ी लगे पारे डोर रो आराम से सब कर शिक्षा दरकार नहीं जो मैंने किसी जानी तो से ऑब्वियसली जानी जिन सब फिटिंग सर जाइए फिटिंग करिया टार बोल्ट रो नॉब बर्तमान आपणकर बाथरूम रेडी भीतर बाहर आप चेक कले देखिले भिडियोटी आपको केमी लगे मतामत दे जनइबे आउ यही भाव में इनफॉर्मेटिव वीडियो देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ एवं लाइक करूँ। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा आउ एक नुआ वीडियो रे।